हेलो एवरीवन, आई एम हनी ठक्कर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ डेब्ट फंड। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फर्स्ट वन इज़ इक्विटी फंड, सेकंड वन इज़ डेब्ट फंड एंड द थर्ड वन इज़ हाइब्रिड फंड. Okay, so we already learned each and every information about what is equity fund and also their types. Understand? So these are the videos that I have already uploaded in my playlist. If you missed up with this video, then go in description and check it. मैंने सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ठीक है? ओके, सो नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डेब्ट फंड. सी बेसिकली ये जो डेब्ट फंड है वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के नाम से जाने जाते हैं. क्यों? क्योंकि डेब्ट फंड उसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जो इन्वेस्टर्स को एक फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करता है, सच एज ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मैनी अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो देयर. ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है डेब्ट फंड के, उनकी जो मैच्योरिटी डेट है वो फिक्स्ड होती है एंड ऑल्सो देयर इंटरेस्ट रेट्स आर ऑल्सो फिक्स्ड. ओके, सो when the maturity dates gets over, investors will receive their interest. That's why this is known as fixed income securities. Okay, now let's understand how this debt fund are work. See, basically क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एंड बिजनेसेस है, वो अपने एक्सपांशन के लिए फंड को रेज करती है. That's why they issue treasury bills, corporate bond, commercial paper for the investors. Okay, and investors pay money in this type of instruments and then government, financial institutions, company provide them return for their investment. Okay, so in this way the debt fund work. Okay, so now let's see who should invest in debt fund. Compared to equity fund, debt fund provide less return to the investors. Okay, and because of that the risk is very low in debt fund, and that's why we can say that it is highly recommended to the investors with lower risk tolerance. Understand? Now debt fund are also available for short term investors who wants to invest for 3 to 12 months, for medium term investors who want to invest for 3 to 5 years. Understand? See, it is suggested that अगर इन्वेस्टर्स को अपने पैसे 3 to 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करने हो एंड स्पेसिफिकली इन डेब्ट फंड, देन लिक्विड फंड इज़ बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि काफ़ी सारे बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर 3 to 12 मंथ के लिए ही अपने पैसे को सेव करना चाहता हो, देन दे इन्वेस्ट इन सेविंग अकाउंट. बट rather investing in saving account, if you invest in liquid fund, then you will get better returns such as 7 to 9%. Okay, now let's talk about medium term investors. काफ़ी सारे बार ऐसा होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे को लगाना चाहता हो, then the first thing that keep in investors mind is bank's fixed deposit. Okay, but it is highly suggested that rather investing your money in fixed deposit for 3 to 5 years, you can invest your money in dynamic bond because it provides you better return compared to fixed deposit. Okay, see, ये जो liquid fund है, dynamic bond है, वो types of debt fund है. Understand? We will understand later on about this. Okay, so now let's see all types of debt fund. So these are the different types of debt fund such as liquid fund, money market fund, dynamic bond fund, gilt fund, then low duration, short duration, medium duration, long duration fund, etc. Okay, I'll make separate video related to all types of debt fund so that you can have a better idea and you will understand in depth. Okay, so here I am done with today's video. Hope you guys understand. And yes, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please subscribe it and also press bell icon so that you can see all my videos at first.
You can also follow my channel on Instagram. ID has been mentioned in description. Okay. Thanks for watching. See you in my next video. Till goodbye. Keep learning, keep investing. Thank you.